Good afternoon, students. We are studying constant velocity or zero acceleration. Constant velocity means the acceleration is zero, the velocity is not changing with respect the time. The time is increasing but the velocity remaining constant. So we can show the constant velocity from this graph. The time at 1 second, 2 second, 3 second, the velocity remains 30 meter per second. Okay, so at average point of time the velocity remains constant, so it is called constant velocity. Now we are studying about equation of motion. We will evaluate the equation of motion from constant accelerated motion, and the graph of a constant accelerated motion of an object is this. At the time 0, the speed of the object is u, that is its initial velocity. At the time t, this is the time this is the velocity. At the time is equal to 0, the velocity is u. At the time is equal to t, the velocity is v. The initial velocity of the object is u. The final velocity is v. From this graph we can say that OA is equal to u. OA is equal to u. मीन्स ये जो हाइट है ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था वो u था, एंड आफ्टर टाइम t the object velocity is changing constantly, and the velocity at the time t, at this time the velocity is v, small v. So from this diagram we are writing OA is equal to initial velocity u or dc, means it is dc OA and this height is u. So OA equal to dc equal to initial velocity u, final velocity v, मीन्स इसका जो अंतिम वेग है ऑब्जेक्ट का वो v है. v is equal to bd. v, this is the height is v, equal to bd. This height BD, and BD can be written as BD equal to DC plus that whole length minus DC. Okay, so BD equal to DC plus BD minus DC. हम इस BC के स्थान पे BD minus DC लिख रहे हैं.
क्योंकि इस पूरी लेंथ में से कंप्लीट BD में से नीचे वाले BC अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये BC की हाइट प्राप्त होती है। तो हम BC के स्थान पे यहाँ पर BD माइनस DC लिख रहे हैं। सो BD इक्वल टू DC प्लस BD माइनस DC एंड दिस BD is equal to final velocity, DC is equal to, you can see here, this is equal to initial velocity u, BD is equal to the final velocity, this is equal to the initial velocity. So v is equal to u plus v minus u. और ये हमने एक्सेलरेशन से पढ़ा। एक्सेलरेशन जब पढ़ा था तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है the rate of change in the velocity a equal to v minus u upon t. Means you can understand from here a equal to v minus u upon t. इससे हमें v minus u is equal to 80 मिल जाता है। v minus u is equal to 80 मीन्स ये t इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता। सो वी आर राइटिंग हेयर v minus u is equal to 80। v minus u के स्थान पे हम 80 लिख देते हैं। then v equal to u plus 80. This is the first equation of the motion. The displacement of the object will be equal to area under the curve. Area under curve AB means area of this rectangle and area of this triangle. The addition of this addition of the area of this rectangle and this triangle. So we are writing here displacement equal to area under the curve, area of rectangle OACD and OACD and area of triangle ABC. So the area of this rectangle will be length into breadth. Length this is the T, this is the length T. Because the initial timing is 0, the final timing t, so this length is t, and the height breadth is 0 to u means u. So area of rectangle OACD is equal to UT. U is equal to its length, T is equal to its breadth. Area of triangle ABC. The formula is area of triangle is equal to 1 upon 2 multiplied by its base and height, base AC and height BC. Base is equal to T, this length equal to this length. So it is T and BC, this height. This height is equal to the total height from here to here V and this is U. तो V में से V इस टोटल में से ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया यानी V में से ये वाला U सब्ट्रैक्ट किया तो ऊपर वाली जो लेंथ है BC ये हमें मिल गई V माइनस U. ओके S इक्वल टू UT प्लस 1 अपॉन 2 T मल्टीप्लाई बाई V माइनस U. सो UT प्लस 1 अपॉन 2 T multiply AT means S equal to the displacement is denoted by S UT plus 1 upon 2 AT square, the second equation of the motion. Average velocity. Average velocity will be initial velocity plus final velocity divided by 2. Average velocity equal to displacement upon time equal to this. So S equal to this will multiply to this, T will multiply to this. So V plus U upon 2 into T, S equal to
From the first equation of the motion, v equal to u plus at and v minus u is equal to at. So t will be v minus u upon a, and we will write here the value of t. This value of t we will write here. यहाँ इस t के स्थान पे हम ये वैल्यू लिखेंगे t की, v माइनस यू अपन a, और ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन से प्राप्त की है, ठीक है। v माइनस यू इक्वल टू 80 से जब हम t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन से, तो a इसको डिवाइड कर देता है। अब t के स्थान पर ये वैल्यू लिखने पर v प्लस यू अपन 2 मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू अपन a, ओके। So v plus u, v minus u upon 2a by the multiplication, s equal to, that is displacement equal to v square minus u square. It is the formula. V square minus u square is equal to u plus v and v minus u. V plus u and v minus u. I am repeating it again. V square minus u square, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूला के द्वारा इसको हम शॉर्टन करके लिख देते हैं, वी प्लस यू एंड वी माइनस यू के स्थान पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख देते हैं, एंड फ्रॉम दिस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ओके। This is the third equation of the motion.